और यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। बच्चों के राइट्स के मामले में वर्ल्ड कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ ये गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कहा कि पुतिन यूक्रेनी बच्चों के किडनैपिंग और डिपोर्टेशन के क्राइम के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। यूक्रेनी बच्चों को दरअसल गैर कानूनी तरीके से देश से निकाल देने के मामले में ये जो वारंट है वो जारी किया गया है। इस तरह के आरोपों में रशिया की चाइल्ड राइट्स जो कमिश्नर मारिया लावोवा-बेलोवा के खिलाफ भी वारंट निकाला गया है। आपको बता दें कि रशिया आईसीसी का मेंबर नहीं है। ऐसे में इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ वारंट को लागू करने की प्लानिंग दरअसल कैसे की है। वहीं आपको बता दें कि रशिया की तरफ से ये कहा गया है कि आईसीसी ने जो अरेस्ट वारंट जारी किया है वो नल एंड वॉइड है, हमें उसकी परवाह नहीं है, ये कहना है रशिया का। वहीं यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इस पर रिएक्शन देते हुए कहा है कि ये तो महज एक शुरुआत है। आपको बता दें कि रशिया ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला किया, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच जो वॉर है वो लगातार जारी है। इस दौरान यूक्रेन कई बार रशिया पर वॉर क्राइम करने के आरोपों को लगा चुका है। हालांकि मॉस्को या कहें कि रशिया वॉर के दौरान किए गए वॉर क्राइम करने के आरोपों को लगातार खारिज करता रहा है। रशिया का कहना है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ये खबर ऐसे समय पर सामने आई है जब चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग 3 डेज बाद यानी कि 20 मार्च को रशिया के 2 दिनों के दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरान पुतिन के साथ यूक्रेन के साथ दरअसल वो वॉर को ख़त्म करने पर बात कर सकते हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन के खिलाफ यहाँ पर अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है। तो जो आईसीसी का जो मेन दफ्तर है वो दरअसल नीदरलैंड में है, हेग में है, और उनके प्रेसिडेंट ने किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कुछ कहा था, ये देख लेते हैं। Today, 17th of March 2023, the International Criminal Court has issued 2 warrants of arrest in the Ukraine situation. For Vladimir Putin, President of the Russian Federation, and for Maria Lvova-Belova, Commissioner of the Russian President for Children's Rights, for the alleged war crimes of deportation of children from Ukrainian occupied territories into the Russian Federation. It is forbidden by international law for occupying powers to transfer civilians from the territory they live in to other territories. Children enjoy special protection under the Geneva Convention. The contents of the warrants are secret in order to protect victims. The ICC attaches great importance to the protection of victims, especially children. Nevertheless, the judges of the chamber dealing with this case decided to make the existence of the warrants public in the interest of justice and to prevent the commission of future crimes. This is an important moment in the process of justice before the ICC. The judges have reviewed the information and evidence submitted by the prosecutor and determined that there are credible allegations against these persons for the alleged crimes. The ICC is doing its part of work. As a court of law, the judges issued arrest warrants. Their execution depends on international cooperation. तो आईसीसी ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। दुनिया भर से रिएक्शंस आ रहे हैं। यूरोपियन यूनियन फॉरेन पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल ने कहा कि ये कदम बहुत बेहतर है, और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए देखते हैं। This is an important decision of international justice and for the people of Ukraine. We have always made clear at the European Union that those responsible for the illegal aggression against Ukraine must be brought to justice. And this International Criminal Court issue is just the start in the process of accountability and holding Russia and its leader to account for the crimes and atrocities they are committing in Ukraine. Mr. President, the European Union appreciates and supports the work of the International Criminal Court and its investigation. There cannot be impunity. और ऐसे ही एक हिस्टोरियन है जो कि इस पूरे मामले पर बहुत करीब से नज़र बनाए हुए हैं। उनका ये कहना है कि अरेस्ट वारंट जो इशू हुआ है पुतिन के खिलाफ, उससे दरअसल कुछ चेंज नहीं होगा, और क्या कुछ उन्होंने कहा ये भी देखेंगे। One thing that we should not forget is the fact that
no immediate arrest is going to happen. Putin is not stupid. He's not going to travel abroad to a country where he might be arrested. In that regard, it's really historical. But at the same time, I think we shouldn't get too excited, because any potential trial we're not going to see in a month or in a year. So it's going to be a bit of a wait until we see what actually comes out of all of this. तो अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है पुतिन के खिलाफ, और वहीं एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और क्या कुछ कह रहे हैं एक्सपर्ट्स, आइए देखते हैं। Realistically, there's almost no chance that we are going to see President Putin in the dock in the short term. So it's just going to be very difficult to get custody of him in the short to even medium term. But that fact alone shouldn't undermine the significance of what the International Criminal Court has done today. By charging Putin and by the court saying they believe that there are reasonable grounds to hold him to account for these war crimes, it sends a very strong message to the entire political community that is involved in trying to negotiate an end to this war. It also sends a very strong message to the victims of these crimes that they are not alone in this, that what they've suffered is being seen by the highest court that we have in the world, that this is a charge that delegitimizes Putin in the eyes of the world.